Hello friends, welcome back to Aliya Gupta, and our topic for today is solubility rules. तो they will tell us कि कौन से substances soluble होते हैं water में और कौन से insoluble होते हैं. First rule जो कि बहुत ही specific होता है, that is all ammonium, sodium and potassium. All ammonium, sodium and potassium salts are soluble in water. Soluble in water मतलब पानी में घुल जाना. तो जितने भी salts होते हैं सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के, जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे वाटर में soluble होते हैं. नेक्स्टली ऑल नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स मतलब NO3 negative and nitrites which is NO2 negative are soluble. जितने भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्राइट होल ट्वाइस, राइट, ये soluble होंगे वाटर में. Now next you need to know all chlorides. जितने भी chlorides हैं like sodium chloride, magnesium chloride, all chlorides are soluble. ठीक है, जितनी भी chlorides होती हैं वो भी soluble होती हैं. Exception क्या है? Except mercury 1 chloride Hg2Cl2, silver chloride AgCl and और क्या, mercury chloride HgCl2, AgCl, सोडियम क्या कह रही हूँ, silver chloride and lead 2 chloride PbCl2. Then all sulfates are soluble. इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, राइट, एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड lead sulfate PbSO4. Then next point we have talked about nitrates, chlorides, sulfates, and the next point is about all sulfides and carbonates are not soluble. ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, potassium sulfide, potassium carbonate and ammonium sulfide, ammonium carbonate. Then all oxides and hydroxides are insoluble. पानी में soluble नहीं होती, are in soluble, right? Exception is sodium oxide, sodium hydroxide, potassium oxide, potassium hydroxide and ammonium hydroxide, ammonium oxide. So now I will quickly recapitulate all of the solubility rules. All ammonium, sodium and potassium salts are soluble. और वो भी इसलिए होता है क्योंकि पोलर बनाते हैं. All nitrates and nitrites are soluble in water. All chlorides are soluble except mercury 1 chloride, silver chloride and lead 2 chloride. All sulfates are soluble in water except for barium sulfate, calcium sulfate and lead sulfate. All sulfides and carbonates are insoluble except sodium sulfide, sodium carbonate, potassium sulfide, potassium carbonate, and ammonium sulfide, ammonium carbonate. Also,
all oxides and hydroxides are insoluble in water except for Na2O, NaOH, K2O, KOH and NH4OH, NH4 whole twice oxide, right? So now I hope the solubility rules are clear, and by looking at a compound you can determine whether it is soluble or not. Let's play a quiz. Okay, I will write the name of compound in and then pause, think if it's soluble, insoluble, and then I will tell you the answer. First, okay, sodium chloride, soluble, insoluble. 3, 2, 1. The correct answer is it is soluble. क्योंकि first of all सोडियम का कंपाउंड है, soluble है, और all chlorides are anyway soluble. Next, let's say lead carbonate. 3, 2, 1. Lead carbonate. I've already told you that अच्छा कार्बोनेट का पॉइंट आई थिंक हमने नहीं देखा है, एक्चुअली देखा है सल्फाइड्स के साथ, राइट? सो यू माइट एज वेल रिमेंबर ऑल कार्बोनेट्स आर नॉट सॉल्युबल एक्सेप्ट दीज. क्या ये सोडियम का कंपाउंड है? नहीं. पोटेशियम का? नहीं. अमोनियम का? नहीं. तो इट इज नॉट सॉल्युबल. ठीक है, वन लास्ट जिंक हाइड्रोक्साइड. Let's see. 3, 2, 1. Hydroxides are not soluble. क्या ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है? नहीं. पोटेशियम का? नहीं. अमोनियम का? नहीं. तो it is not soluble. Now I hope the solubility rules are clear, and by looking at the formula of a compound you can determine whether the compound is soluble in water or insoluble. So that was all for today's tutorial. Goodbye. Thanks for watching.